गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, वेलकम वंस अगेन फॉर दी सेशंस ऑफ द MCQ प्रैक्टिस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पहले प्रॉमिस किया था, हाँ मैं 18 तारीख को यह सेशन लेने वाला था, पर कुछ कारणों की वजह से उस दिन पे मैं ये सेशन नहीं ले पाया, तो आज मैं इसको कर रहा हूं कंटिन्यू। और यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स के एडिशनल MCQs जो जो आपके ICI मॉड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह के MCQs को, एडिशनल MCQs को हम लोग यहां पे करने वाले हैं डिस्कस। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये आप उम्मीद रखिए दोस्तों कि आपके एग्जाम में भी जरूर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से, बहुत समझ के सॉल्व करना होगा, लिखना होगा। और हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम लोग इन पर्टिकुलर MCQs को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ MCQ डिस्कस नहीं करने वाले, उसके साथ साथ उसके लॉजिक भी लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, पेपर और पेन तैयार रखिए, MCQs आपके सामने आने वाले हैं। मैंने रेफरेंसेस के लिए हर MCQ के साथ साथ उसका मॉडल टेस्ट पेपर का कोडिंग भी रख दिया है, मतलब कौन से मॉडल टेस्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर पे ये इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ आज नहीं, आज शाम तक के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पूरा PDF भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय को और जगह व्यतीत किए हुए हम लोग करते हैं अचानक से स्टार्ट। आज अचानक से MT सर की याद आ गई, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये सुन के। मई में भी कराए थे क्या आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये पहली बार सितंबर एग्जाम के लिए MCQ की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो इसकी हम लोग कर रहे हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पहले वाले MCQ पे, दैट इज इफ अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is greater than gross national product, it implies that। दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक और ग्रॉस नेशनल, इन दोनों में फर्क क्या है? GDP प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज व्हाट यू कॉल एज द GNP। तो अगर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव होगा, तभी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। GDP प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर है तो आपका GNP ज्यादा होना चाहिए, पर GDP माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है आपके GNP का वैल्यू, तो इसका मतलब आपका GDP ज्यादा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द GNP, देन इन दैट केस व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन फॉर द कंट्री? द कंट्री इज अ नेट एक्सपोर्टर, द कंट्री इज अ नेट इंपोर्टर, has a trade surplus, has a trade deficit. The country will be said to be into a trade deficit। यहां मैं नेट एक्सपोर्टर या नेट इंपोर्टर की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि नेट एक्सपोर्टर ये क्वांटिटी वाइज हो सकते हैं, आप नेट इंपोर्टर आप क्वांटिटी वाइज हो सकते हैं, बट जब हम लोग वैल्यू वाइज बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज द ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस। सो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस केस विल बी हैज अ ट्रेड डेफिसिट। तो प्लीज टिक द आंसर ट्रेड डेफिसिट और उसके नीचे लॉजिक लिख दीजिए दैट व्हेन द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस, व्हेन द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देन द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, द कंट्री इज सेड टू हैव, द कंट्री इज सेड टू हैव the trade deficit, therefore GDP will be, therefore GDP will be greater than, GDP will be greater than the GNP, GDP will be greater than the GNP। Am I going good? अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग द एक्सपेंडिचर अप्रोच? आप एक्सपेंडिचर अप्रोच, अगर आपको 3 अप्रोचेस याद हो, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द इनकम, दैट इज वैल्यू एडिशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड द इनकम मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हर बिजनेस कितना खर्च कर रहा है उनको एग्रीगेट किया जाएगा या नहीं?
एक के लिए इनकम ये हमेशा दूसरे के लिए खर्च है या नहीं? सो एक्सपेंडिचर्स व्हेन एडेड विल बी गिविंग यू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग. दिस ऑल विल गिव यू इन टोटल व्हाट? द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स और कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. अगर आपको जीडीपी की बात करनी है मतलब डोमेस्टिक बात कर रहे हैं आप लोग, और अगर आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स का सवाल ही नहीं उठता है, मतलब ऑप्शन बी हो गया आपका एलिमिनेट. गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो भी तो आपके ही देश के लिए हो रही है नहीं. गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इटसेल्फ और नॉट. तो इसलिए आपका ऑप्शन सी और सॉरी बी और डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे. क्यों? तो वहां पे एक्सपोर्ट्स की बात की गई थी, बराबर. और इसलिए अब बचा क्या था? सिर्फ ए या फिर सी. इसमें से आप अगर सी और ए में कंपेयर करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्लूड नहीं हुई थी. अगर आपको 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल याद हो तो 3 सेक्टर मॉडल में कहा जाता है गवर्नमेंट द्वारा किया गया खर्च भी ये आपके देश की नेशनल इनकम के लिए इंक्लूड होता है या नहीं. एंड दैट्स व्हाई, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाई एम आई नॉट कंसीडरिंग 4 सेक्टर? क्योंकि 4 सेक्टर मॉडल कीनीजियन चैप्टर 6 यूनिट 2 की बात कर रहा हूं मैं. कीनीजियन 4 सेक्टर मॉडल की बात करें तो 4 सेक्टर मॉडल में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी कंसीडर होते हैं, पर हमको उसको एक्सक्लूड करना है क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, नेशनल की बात नहीं. अगर नेशनल पूछा होता तो हमने एक्सपोर्ट्स को भी इसमें इंक्लूड किया होता, राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट सी. राइट डाउन. अंडर द एक्सपेंडिचर अप्रोच, under the expenditure approach, the total expenditure incurred by the government, the total expenditure incurred by the government or households will be included for the gross domestic product, will be included for the gross domestic product. राइट. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग. आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट. नेक्स्ट वाले पे आता हूं मैं. विच कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स, विच कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स द इनकम्स earned by individuals and businesses before taxes and other deductions? Which component of national income represents income earned by individuals and businesses before taxes and other deductions? क्या ऑप्शंस है? पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब इसमें से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो उड़ गया. क्यों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज सब्सिडीज. सो फॉरगेट अबाउट दैट. हम लोग इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स की बात कर रहे हैं. इनकम अर्न्ड बाय हुम? इंडिविजुअल्स, मतलब पर्सनल इनकम की बात चल रही है. अच्छा, अब यहां पे सवाल क्या बनता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल इनकम? तो जीडीपी जीएनपी उड़ गया आपका, क्योंकि नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं बट आप लोग इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, मैं लॉजिक को थोड़ा सा स्लो बताता हूं आपको और उस तरह से आप उसको लिखते जाइए जी. विच कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स द इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस? अगर मैं इनकम में से टैक्स को माइनस कर दूं तो बचेगा मेरा डिस्पोजेबल इनकम, पर यहां बिफोर दैट बोला हुआ है या नहीं? क्योंकि बिफोर टैक्सेस बोला है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्सनल इनकम. राइट डाउन. The disposable income is the amount, the disposable income is the amount earned by the individuals, earned by the individuals and households, and households the disposable income is the income earned by the individuals and households
after taxes and deductions, after taxes and deductions from personal income, after taxes and deductions from personal income, comma, therefore, income before that, is considered as, personal income. Next one, which of the following is a factor income? Question is, which of the following is a factor income? Profits, transfer payments, subsidies or indirect taxes. Factors matlab whom labor is a factor, against that you pay compensation in the form of either salary or wages. दूसरा फैक्टर क्या आपका? कैपिटल. For capital, against that you pay what? Interest, rent or profits. And third factor is your entrepreneur, what you call as self-employed. Self-employed. For them, what do you pay? Is the mixed income or not? So which all will be considered as factor income? Either salaries or wages to the employees, or interest or rent or profits, or mixed income. Here we are given the option as profits. Therefore, the correct answer is profits. Write down. The transfer payments are from government to the households. The transfer payments are from government to the households without any productive efforts. Without any productive efforts. The subsidies and indirect taxes. The subsidies and indirect taxes are considered to arrive at the net domestic product, to arrive at the NDP, and are the government revenue and expenditure, and are the government revenue and expenditure. Therefore, not the factor income. Therefore, not the factor income. जी बिल्कुल, कैपिटल के अगेंस्ट डिप्रिसिएशन भी फैक्टर इनकम के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है. या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक ये पीडीएफ नहीं है, अभी के लिए आप लॉजिक लिख लीजिए और उसके पश्चात आपको बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ मिल जाएगा. राइट? आज मैं ये अपलोड नहीं कर पाया हूं, पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा. डोंट यू पीपल वरी एट ऑल. राइट? हाल फिलहाल के लिए मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस रख रहा हूं उसके साथ साथ मैंने आपको रेफरेंसेस दे रखे हैं ऑफ द मॉडल टेस्ट पेपर. ये क्वेश्चंस कहां से लिए गए हैं उसका रेफरेंस इसलिए मैंने रखा हुआ है आपके सामने. Alright, next one, which of the following activities is excluded from the GDP causing GDP to understate, there is a gap between these two, to understate a nation's well-being. Which of the following activities is excluded from the GDP causing GDP to understate a nation's well-being? The services of used car dealers, ये आपके GDP में इंक्लूड होगा या नहीं? क्योंकि यूज कार डीलर जो आपका आउटपुट क्रिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हिज कमीशन, दैट विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जीडीपी. द चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टे एट होम पेरेंट्स. द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस इज ऑल्सो अ मॉनिटरी सर्विस. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन मिलिट्री इक्विपमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जीडीपी. So what is not included in the GDP is
द चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टे एट होम पेरेंट्स. स्टे एट होम पेरेंट्स का मतलब कौन? होम वर्कर, होम मेकर्स और हाउस वाइफ्स और हाउस हस्बैंड, राइट? Those kind of people are staying back, but they are not getting anything return, and that's why it is not included in the part of GDP, even though they are creating the culture of the country, but they are not creating the GDP for the country. So write down the logic of this. It being a non-monetary service, it being a non-monetary service, it is not included as the part of GDP, as the part of GDP. I hope for everyone I am going fantastic and you people are understanding, and you are understanding the reason for sitting in this class also. You're not sitting in here just for the sake of doing time pass, my dear friends. Just a month away, you have got your exam scheduled. So I hope this particular session is help you a lot. Next one. Which of the economists below is most likely to advocate activist government policy? हमारे मिल्टन फ्रेडमैन भाई साहब ने लिखी थी थियरी रिलेटेड टू डिमांड फॉर मनी. रॉबर्ट लुकस भाई साहब ने भी लिखी थी द डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड एक थियरी. थॉमस सार्जेंट इज नॉट टॉक्ड अ लॉट व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक्स, बट व्हेन इट कम्स टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, किसने सबसे ज्यादा बात की हुई है? जॉन मायनेट कीन्स. John Maynard Keynes. What is his book's name? Write down. Through the book, that is the theory of interest, employment and public expenditure. General theory of employment theory of interest नहीं, general theory of employment, interest, general theory of employment, interest and money. Keynes talked about the government policies. Next one, आपके चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2. In simple Keynesian model, investment is fixed, a function of level of income, either fixed or a function of level of income and none of the above. मतलब ये क्या हुआ? Option A, option B, either A or B and none of the above. The correct answer is, to certain extent it is fixed, but beyond a particular point it will be the function of your level of income or not. Because C plus I is your national income. As per Keynes, it is what? National income is equal to C plus I. I is what? Investment, and C is what? Consumption. Now I up to a particular point is fixed, constant, but after a particular point the investment is the function of your level of income. That's why I plus FI, I plus I dash, if you remember, I plus I dash is nothing but plus C will be considered as the national income. Yes or no? Write down. Under the Keynesian model, up till a particular point, C plus I remains same.
C plus I remains same. However, when an individual's level of income increases, the propensity to consume decreases. And the marginal propensity to save increases. And the MPS, that is marginal propensity to save, increases. And the MPS, that is marginal propensity to save, increases, comma, in effect, when the level of income of an individual increases, the investments will also increase. Next one, the next question. The total value of output of a country will be equal to total value of output, market prices, consumption, investment और national income. Of course, total value of output की बात कर रहे हैं हम लोग. That will be our national income or not? Because that can be calculated in the form of GDP, that can be calculated in the form of NDP, but ultimately what you are interested to calculate is NNP at factor cost. And your NNP at factor cost is nothing but the national income. Write down. The aggregate value of outputs, compensated in the form of the factor costs combined together is the national income for the country. Is it one right? Next one, nominal GDP. Nominal GDP मतलब क्या? The aggregate of all outputs at current prices considers current prices, base year prices, current and base year's prices, and none of the above. The correct answer is current prices. So write down. The nominal GDP for the country, is calculated using the current prices, comma, whereas the real GDP is calculated using the base year's prices, Is it one right? Next one, real GDP is devoid of inflation,
nominal GDP greater than GDP, nominal GDP equal to nominal GDP considers only current prices. अब इसमें से ऑप्शन डी तो आपका पहले से उड़ गया, because when you are talking about real GDP, it considers what? Base year's prices. And as it is going to consider the base year prices, therefore D तो उड़ गया आपका. अब सवाल बनता है whether it is greater than nominal GDP or equal to nominal GDP. Now, if it is considering the base year's prices and not the current year prices under the inflationary situations or the deflationary situations, it can never be equal to the nominal GDP. Real GDP, if only in the base year, will be equal to the real GDP, nominal GDP, and never ever again. Afterwards, either it will be more than or it will be less than. Whereas it is greater than nominal GDP, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा अगर दिया होता real GDP in the deflationary situation is greater than nominal GDP, करेक्ट आंसर हो जाता. बट यहां इस तरह की कोई चीज मेंशन है क्या? नहीं, इसलिए ऑप्शन बी, सी और डी तो हो गए आपके एलिमिनेट. अब ए क्यों करेक्ट आंसर है? डिवॉइड ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि आप चाहे करंट ईयर की जीडीपी कैलकुलेट करो या 2025-24-25 की जीडीपी कैलकुलेट करो या 2023-24 की, इफ यू हैव कंसीडर्ड द बेस ईयर एज, मान लो 2010-11, every year's inflation is already factored out or not, and that's why the correct answer is devoid of inflation. Write down the correct answer. The real GDP is calculated, the real GDP is calculated using the prices for the base year, using the prices for the base year, which means the inflation or falling prices, which means the inflation or the falling prices do not affect the real GDP, do not affect the real GDP. Next one, the economic well-being of economy is measured by, economic well-being, financial well-being की बात चल रही है, real GDP, gross national product, net national product और nominal GDP. नॉमिनल जीडीपी में इंफ्लेशनरी फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, देयरफॉर इट विल नॉट बी कंसिडरिंग ओनली द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इट विल बी कंसिडरिंग द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑल्सो. तो डी हो गया आपका एलिमिनेट. जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट ओनली द वेलबींग ऑफ योर इकोनॉमी. सो द मोर अप्रोप्रिएट, अगर मेरा 2010-11 का जीडीपी, रियल जीडीपी मान लो 180 करोड़ का था और 2024-25 का रियल जीडीपी मान लो 370 करोड़ का है, then in that case I have got the real growth in my economy or not? This particular 190 crore का growth is considered as the real economic growth, real economic growth, and that's why what is more appropriate? The real GDP. अगर किसी बच्चे को अटेम्प्ट लगा तो एकत्वम सेकंड अटेम्प्ट भी फ्री देती है क्या? नहीं. हाँ, राइट डाउन रियल जीडीपी एंड दैट राइट डाउन. द रियल जीडीपी फैक्टर्स इन, द रियल जीडीपी फैक्टर्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन अकाउंट ऑफ, the economic growth on account of actual production of goods and services, actual increase in actual production of goods and services, that in effect indicates, that in effect indicates the economic well-being of the country, the economic well-being of the country.
एनएनपी। अब यहां इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ये तो या तो आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं या तो उसके कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं। एनएनपी इज नथिंग बट नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब सबसे पहले आया आपका जीडीपी। जीडीपी में से अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीडीपी को अगर आपने एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट, जस्ट अ मोमेंट, जीडीपी को अगर आपने एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इससे आ जाएगा आपका जीएनपी। और जीएनपी में से अगर आपने कर दिया डेप्रीसिएशन को बाहर, तो ये आ जाएगा आपका एनएनपी। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसी चीज को पूछने का क्या है, जीडीपी में से अगर आपने पहले डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया तो आपके पास बचता है एनडीपी। और एनडीपी के अगेंस्ट अगर आपने एडजस्ट कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो भी आ जाएगा आपका एनएनपी। राइट। क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से इसे पूछा जा सकता है, दैट इज एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। सो मोर अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, क्योंकि फैक्टर पेमेंट्स ये जो है ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तब कैलकुलेट किया जाएगा अगर पहले से आपको ग्रॉस नेशनल के बेसिस पे दिया गया है, तो दैट सिंपली इंडिकेट्स दैट यू आर कंसिडरिंग ओनली द डेप्रीसिएशन। राइट। तो यहां पे लॉजिक लिख दीजिए इसका, GNP minus depreciation is also NNP. GNP minus depreciation is also NNP, or NDP plus NFIA, NDP plus NFIA is also NNP. Is also NNP. Is it point right? Just a moment, मुझे मेरे चैप्टर नंबर 7 की अब तक के पीपीटी नहीं मिली है, तो आई हैव टू जस्ट चेक इट। मैं उसी चीज का बार बार इंतजार कर रहा हूं, इसलिए बार बार मैं मोबाइल पे जा रहा हूं। खैर, जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेटर इज नथिंग बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग योर नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी। हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? नॉमिनल डिवाइड बाय रियल मल्टीप्लाइड बाय 100. सो राइट डाउन deflator which is also called as the consumer price index, called as the consumer price index, comma, it is used to convert nominal GDP, it is used to convert nominal GDP to real GDP, nominal GDP to real GDP. Is it point right? मेरा ये काम हो सकता है अब। जस्ट अ मोमेंट। Yeah, to convert nominal GDP into the real GDP. Is it right? The next one, question number 14. मैंने हर टॉपिक पे आप लोगों के लिए 30-30 क्वेश्चन अभी उठाए हुए हैं। हर टॉपिक पे, हर चैप्टर पे मैं 30-30 क्वेश्चंस यहां पे इन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं।
और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया हुआ है, आई एम गोइंग टू टेक द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द होल ऑफ द इकोनॉमिक सिलेबस, जो रहेगी 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर के बीच। टाइमिंग रहेगा शाम के 4:30 से 7:30 बजे के बीच। ये रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो पार्ट। और साथ ही साथ मैं लेने वाला हूं अकाउंट्स के भी प्रैक्टिस सेशन, जो कि रहेंगे सुबह 4:30 से 9:30 बजे तक। दैट विल बी अगेन फ्रॉम फ्रॉम 1 सितंबर टू 5 सितंबर ओनली। राइट, तो आ जाता हूं मैं वापस, आगे बढ़ता हूं। दैट इज, हु डज द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री? हु डज द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री? नेशनल इनकम का कैलकुलेशन आपको अगर याद होगा तो 3 अथॉरिटीज है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मॉस्पी, और तीसरा स्टेट स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर स्टेट्स। तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो करते हैं, नेशनल इनकम का जो अकाउंटिंग होता है वो कौन करता है? CSO, that is the Central Statistics Office. The CSO is given the responsibility. The CSO is given the responsibility of calculating the statistics and accounting for the data. And accounting for the data. Next, gross value method is employed in India. Gross value method, 3 methods of calculating your national income are what? Number 1, gross value added method. Number 2, expenditure method. Number 3, income method. Gross value added में क्या करोगे आप? मान लो A, B, C 3 लोग हैं। A ने B को, सॉरी, मैं बात कर रहा था दैट देयर आर द पार्टीज एज, अगर A ने B को और B ने C को, A ने गुड्स बेचे B को 1 लाख रुपए में, B ने इस 1 लाख रुपए में मक्खन लगाया 40,000 रुपए का और C को बेचे 1,40,000 रुपए में। C ने इन गुड्स पे और मक्खन लगाया और 20,000 रुपए अपने जोड़े। इन दिस केस A has added the value of 1 lakh, B has added the value of 40,000, C has added the value of 20,000, and therefore the gross value added by all put together is 1,60,000। अगर यही इनकम मेथड होती तो C की इनकम कितनी? 1,20,000, आई एम सॉरी 1,60,000। B की इनकम कितनी? 1,40,000। A की इनकम कितनी? 1 लाख। इसका मतलब आपके इनकम मेथड में you'd have considered the income of all or not, and that's why that method will not be correct. Therefore, to avoid the double counting of income, to avoid the double counting of the gross value of the national income, we follow what? The gross value added method. The gross value added method, to avoid the double counting of the data. Under the gross value added method, write down, under the gross value added method, the value addition of each intermediary, the value addition of each intermediary from the point of production to the point of consumption, from the point of production to the point of consumption, is considered which means the aggregate output will avoid the double counting of the data. The double counting of the data. Is it point right?
करेक्ट आंसर इज ए, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग. कैप्चर कंजम्पशन लेवल्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट कम्स अंडर द कंजम्पशन मेथड. टू कैलकुलेट द एक्सपोर्ट्स, क्वेश्चन ही नहीं उठता है भाई. एक्सपोर्ट्स का और आपके नेशनल इनकम का क्या संबंध? देन सीपीआई, व्हाट इज सीपीआई? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स is calculated once in 45 days, once in 3 months, once in fortnight, once in a month. The correct answer is once in a month. As decided by the CSO, as decided by the CSO, Center for Statistics Office, Central Statistical Office. Which of the following is an example of transfer payment? Transfer payment मतलब जो गवर्नमेंट आपको फ्री फोकट में पैसे दे रही है, that is what you call as transfer payment. Write down, transfer payment means incomes received but not earned. इनफैक्ट हमारे जो फेस टू फेस के बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली उनकी क्लास कंप्लीट की फॉर देयर सितंबर एग्जाम, फॉर देयर इंफॉर्मेशन, आई एम सिटिंग इन द सेम क्लासरूम वेयर योर लेक्चर्स यूज्ड टू हैपन, राइट? सो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो ना हो, मेरे लिए अब आज ऐसा लग रहा है यार उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूं बट क्लास पूरा का पूरा खाली पड़ा है, राइट? तो ठीक है, कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं, अभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं और आपको वो सिचुएशंस को भी हैंडल करना जरूरी होता है. और आप लोगों के लिए तो एनीवेज घर में बैठना और पढ़ाई करना इस समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ट्रैवलिंग. करेक्ट और नॉट? चलिए, सो अच्छा, ट्रांसफर क्या लिखा आपने? ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड इनकम्स रिसीव बट नॉट अर्नड. दैट इज व्हाट, गवर्नमेंट ने आपको पैसा ट्रांसफर किया पर आपकी वो अर्निंग नहीं थी. एंड व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन दैट? मनी वेजेस. उसके लिए तो आपने कंसिडरेशन सप्लाई की थी, प्रोडक्टिविटी थी, राइट? मिनिमम सपोर्ट वेजेस, ये क्या है? फॉर द फार्मर्स सपोर्ट. सो दैट विल ऑल्सो बी अगेंस्ट द कंसिडरेशन और नॉट? Brokerage commission is also against the consideration. Therefore, the correct answer is unemployment allowance. क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हो, फिर भी गवर्नमेंट आपको भत्ता या की अलाउंस देने के लिए रेडी है नहीं. तो एग्जाम्पल इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं. मिस्टर राम ग्रोस टोमेटोज फॉर होम कंजम्पशन. टोमेटोज फॉर होम कंजम्पशन, इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज बीन इंक्लूडेड. अगर सिर्फ ग्रोस टोमेटोज होता तो बात अलग थी. ग्रोस टोमेटोज फॉर होम कंजम्पशन मतलब कैप्टिव कंजम्पशन हो गई. कोई नहीं वेद, यू कैन कम फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑन 28th, राइट? अच्छा, एक और सेशन, जैसा आज हम लोग सेशन ले रहे हैं इसी तरह से एक और सेशन होने वाला है हमारा 28th ऑफ अगस्त को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10. आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7, राइट? मिस्टर राम ग्रोस टोमेटोज फॉर होम कंजम्पशन. इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग. Excluded from GDP because an intermediate good is involved. Productive but is excluded from GDP because no market transaction occurs. Included in GDP. अच्छा, included in GDP तो उड़ गया. क्यों? जिसमें मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है उसमें इंक्लूडेड इन जीडीपी ये सवाल ही नहीं उठता, राइट? तो तीनों के तीनों एक्सक्लूड वाले आंसर करेक्ट है. अब डबल काउंटिंग कब होगी? जब वो जीडीपी में इंक्लूड होने वाला होगा तब. तो फॉरगेट अबाउट दैट. The more appropriate or correct answer is productive but excluded because it is not involving any monetary transaction, right? सर ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदे ने बाहर से लेने के बजाय अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जीडीपी में अपॉर्चुनिटी नहीं इंक्लूड होती है. जीडीपी इंक्लूड्स ओनली द एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट. राइट डाउन द आंसर. द जीडीपी इंक्लूड्स
real output or production during the year that is transferred from one person to another. That is transferred from one person to another. Sure beta, I'll start it very soon. मैं सैटरडे से ही मेरे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाला था, दिक्कत बन गई थी कुछ पर्सनल इशू, पर्सनल लेवल पे, जिसकी वजह से नहीं स्टार्ट कर पाया, पर कल हम लोग उन प्रैक्टिस सेशंस को भी स्टार्ट कर लेंगे. Because today I am involved into this MCQ practice session, that's why I am not able to focus on accounts today. तो कल से हम लोग अकाउंट्स के भी प्रैक्टिस सेशंस रिज्यूम कर देंगे. Alright. Which of the following is not an example of transfer payment in the sense of national income accounts? Not a transfer payment, यानी कि गवर्नमेंट फैमिली अलाउंसेस, गवर्नमेंट फैमिली को अलाउंसेस क्यों दे रही है? फॉर सपोर्टिंग दोज फैमिलीज और नॉट? उसके लिए फैमिलीज ने कोई काम किया क्या? नहीं. दैट्स व्हाई दैट विल बी द ट्रांसफर पेमेंट. पब्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफर बेनिफिट. Dividends paid by corporation to the stockholders. Dividends paid is the part and parcel of personal income. Yes or no? So that means it is not a transfer payment, but it is the actual payment against the output or against the consideration. मैंने investment की, उसके लिए तुम मुझे dividend pay कर रहे हो नहीं? So write down, the correct answer is option C. Dividends are the payments by the corporations. Dividends are the payments by the corporations towards the investment by the shareholder. Towards the investment by the shareholder, which means it is a factor payment and not a transfer payment. Which means it is a factor payment and not a transfer payment. राइट. चलिए अगले सवाल पे आता हूं मैं. द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी इज, नॉमिनल जीडीपी ओनली अकाउंट फॉर सिटीजन, नॉमिनल जीडीपी यूजेस प्राइस लेवल्स ऑफ सम बेस ईयर, नॉमिनल जीडीपी यूजेस एक्चुअल प्राइस लेवल्स, रियल जीडीपी ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज वेयर एज नॉमिनल जीडीपी ओनली टेक्स गुड्स इनटू अकाउंट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन यूजेस द प्राइस. Nominal GDP uses the price level. Sorry, option C is the correct answer. The difference between the real and nominal GDP is what? Option C. Option C. Why? Because the nominal GDP is calculated. C होना चाहिए correct answer. गलती से B टिक हुआ है. The nominal GDP is calculated using the current prices, whereas the real GDP is calculated using the price levels of some base year. Next, a recession is a decline in the unemployment rate. No, recession में unemployment rate बढ़ता है, घटता नहीं है. So option A eliminated. पोटेंशियल जीडीपी दैट लास्ट 6 months और लॉन्गर. पोटेंशियल जीडीपी नहीं, आज के जीडीपी की बात करनी है. सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग. इन्फ्लेशन रेट कम होने से रिसेशनरी सिचुएशंस नहीं आती हैं. तो डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. रियल जीडीपी दैट लास्ट्स फॉर 6 months और लॉन्गर. व्हेन देयर इज अ कंटिन्यूअस फॉल इन द रियल जीडीपी, इट इज कंसिडर्ड एज द सिचुएशन ऑफ रिसेशन. When the real GDP falls, B is the correct answer. When the real GDP falls for a continuous period
of more than 3/4, sorry, more than 2/4 of more than 2/4, it is called as the situation of, it is called as the situation of recession. It is called as the situation of recession. Right? Next, for a person to keep his real income steady at certain level from one year to next, his nominal income must stay the same as the price index rises, rise as fast as the price index, fall if the price index rises, rise if the price index falls. Try to understand and observe the question first. To keep his real income steady. रियल इनकम मतलब कौन सी? प्राइसेस रिमेनिंग कांस्टेंट. मतलब अगर सपोज बेस ईयर का प्राइस 100 है और इस साल का प्राइस इंडेक्स आपका 105 है, मेरी इनकम पिछले साल में अगर 5 लाख थी तो इस साल में वो 5,25,000 होनी चाहिए या नहीं? इस साल में 5,25,000 होनी चाहिए. तो अगर मेरी इनकम लेवल मेरे इंडेक्स के प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, मतलब माई इनकम लेवल्स आर स्टेडी और नॉट. अगर इससे ज्यादा बढ़ गई, सपोज मेरी इनकम हो गई 5,40,000, इंस्टेड ऑफ 5,25,000 माई इनकम बिकेम व्हाट? 5,40,000. In this case I am rising better than my real income is steady. नहीं, my real income is rising. Whereas यहीं पे अगर मेरी इनकम केवल 5,10,000 रुपए पे आई, पिछले साल मेरी इनकम कितनी थी? 5 लाख, इस साल मेरी इनकम हो गई 5,10,000, मतलब द ग्रोथ ऑफ ओनली 2% और नॉट. Whereas the GDP growth is, sorry, price index growth is 5%. In that case my real income is falling. Did you people understand this? So write down the logic of that. Rise as fast as the price index. With the real income of an individual grows in same proportion as the inflation, grows in same proportion as the inflation, comma, the real income is said to be steady. The real income is said to be steady. Manish जी, इन्फ्लेशन का रेट है आपका 5%, आपका इनकम राइज हुआ बाय 5%, तो इसका मतलब आपका परचेसिंग पावर उतना ही रहेगा या नहीं? विच मीन्स योर रियल इनकम इज स्टेडी और नॉट. रियल मतलब क्या? नॉमिनल माइनस डिफ्लेटर, दैट विल गिव यू द रियल जीडीपी और नॉट. सेम वेज आपकी नॉमिनल इनकम, करंट प्राइस वाली इनकम, आफ्टर डिफ्लेटिंग यू विल गेट द रियल इनकम. तो अगर आपका रियल इनकम 5% से बढ़ा और मार्केट में इंफ्लेशन भी 5% से बढ़ा, मतलब योर रियल इनकम इज स्टेडी एज इन टैंडम विद द इन्फ्लेशन और नॉट. पर अगर आपका रियल इनकम बढ़ा 10% से, पिछले साल की आपकी इनकम 5 लाख, इस साल की आपकी इनकम 5,50,000, आपको 50,000 रुपए ज्यादा मिले. किस वजह से? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की वजह से. तो 5% बढ़ना चाहिए था, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी 5% और ज्यादा बढ़ गई या नहीं? दैट मीन्स योर रियल इनकम इज ग्रोइंग फास्टर देन द प्राइस इंडेक्स और नॉट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? उसी तरह से अगर आपकी इनकम केवल 2% से बढ़ रही है, in this case your real income is growing lesser as compared to the price index level. price index मतलब क्या? inflation level. मैंने 100 का 105 क्यों किया? 105 इज प्राइस इंडेक्स, और वो कैसे डिराइव किया? 5% का इन्फ्लेशन जोड़ के. Did you understand it now? अगर आपकी इनकम आपके इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जितनी ही बढ़ी, मतलब योर रियल इनकम इज इन टैंडम. पर अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा बढ़ी तो यू आर ग्रोइंग फास्ट, अगर आपकी इनकम उससे कम बढ़ी तो यू आर ग्रोइंग स्लो. राइट? नेक्स्ट वन,
If GDP gap is positive, then the inflation rate is falling. The actual GDP is greater than the potential GDP. Potential GDP is greater than the actual GDP and the unemployment rate is rising. GDP gap क्या होता है? आपका आज का GDP and your targeted GDP. हमारे देश की सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा दैट टारगेटेड जीडीपी फॉर द करंट ईयर इज एट 6.5% ग्रोथ. टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ इज व्हाट? 6.5%. एंड योर करंट जीडीपी इज, लेट्स से, ग्रोइंग. जीडीपी ग्रोथ करंटली इज एट, लेट्स से, 4%. का मतलब क्या हुआ? आपका जो गैप है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज जीडीपी गैप. 2.5% का गैप है. अब आपका जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्रोथ परसेंटेज आ गया आपका, मान लो 6% पे, और आपका टारगेटेड जीडीपी है 6.5% पे. अब गैप कितना आ गया? ओनली 0.5% और नॉट. तो जैसे जैसे आपके एक्चुअल जीडीपी और टारगेटेड जीडीपी के ग्रोथ का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता जाएगा, ये गैप कम होता जाएगा. मतलब यू आर हैविंग द पॉजिटिव सिचुएशन और नॉट. जीडीपी गैप कम होना इज पॉजिटिव, जीडीपी गैप बढ़ना इज नेगेटिव. द एक्चुअल जीडीपी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल जीडीपी इज द करेक्ट आंसर. सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आपके जीडीपी पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, याद रखिए. इन्फ्लेशन के साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है या नहीं? जीडीपी इज नॉट ओनली द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन, जीडीपी इज ग्रोथ. अब पिछले साल का आपका जीडीपी था मान लो 400 करोड़, इस साल में आपका जीडीपी हुआ 440 करोड़. तो ये जो 40 करोड़ का ग्रोथ आया आपका, दिस इज नॉट कम ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. दिस हैज कम बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स. व्हाट दोस टू फैक्टर्स आर? ये जो 40 करोड़ का आपको ग्रोथ मिला, दिस इज बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स. वन इज इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन. आपका प्रोडक्शन बढ़ा, इसी वजह से तो आपका जीडीपी ग्रो हो रहा है ना, राइट? सो राइट डाउन द करेक्ट आंसर एज टारगेटेड जीडीपी इज नथिंग बट पोटेंशियल जीडीपी. When the current GDP level and the targeted GDP level narrows down, it is said that GDP gap is positive. It is said that GDP gap is positive. Whereas in the reverse situation, the GDP gap is said to be negative. The GDP gap is said to be negative. Is it right? Next one. A nation's gross domestic product, GDP, can be found by summing up C plus I plus G plus export in import. XN is nothing but net exports. Is the dollar value of the total output produced by its citizens regardless of where they are living, can be found by summing up as consumption plus savings plus government expenditure plus export, net exports, is always some amount less than NDP. D और B हो गया एलिमिनेट. क्यों? हम हमारे देश का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करेंगे. हम चाइना में जाके अगर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो चाइनीज युआन या फिर रेमेबी में कैलकुलेट करेंगे. तो इसका मतलब डॉलर वाला वैल्यू ये तो हो गया कैंसिल, उड़ गया. डी क्यों उड़ा? जीडीपी विल ऑलवेज बी लेस देन एनडीपी, हो ही नहीं सकता. क्यों? जीडीपी प्लस माइनस
depreciation will give you the net domestic product or plus minus नहीं, minus depreciation will give you the net domestic product or not. So forget about that. अब बचा C plus S plus G plus X or C plus I plus G plus X. This is Keynesian 4-sector model. Keynes 4-sector model. What is 4-sector model? Public, that is household. Businesses, government, and foreign. Correct? Public से related expenditure, business से related investments, government से related government expenditure, and foreign से related export आएगा ही नहीं. Therefore, correct answer is what? A and not C. Under the 4-sector model of Keynes, the national income includes public consumption, business investments, government expenditure, and net exports. Is the point right? Next one, gross value method is employed in India. ये हमने already discuss किया हुआ है, I'm not going it again. Next one, consumer price index is calculated. ये भी repeated है, once in every month is the correct answer. GDP includes neither intermediate nor final goods, both intermediate as well as final goods, intermediate but not the final goods, final but not intermediate goods. Output. GDP includes what? Output. Output is nothing but final goods or services. Now these goods can be consumer goods, these goods can be capital goods, but ultimately it is for the final consumption or not. And that's why GDP includes what? Only the final but not the intermediate goods. Write down. GDP is the aggregate of outputs. GDP is the aggregate of outputs in the form of goods as well as services. In the form of goods as well as services. Which means it includes only the final outputs. It includes only the final outputs. Right? Which of the following is the final good or service? Diesel fuel bought by a delivery truck. डिलीवरी ट्रक के लिए डीजल ये इंटरमीडिएरी गुड्स हो जाएंगे. क्यों? उसका फाइनल आउटपुट क्या? द सर्विस. गाड़ी नहीं, सर्विस. डिलीवरी ट्रक मतलब कौन? द पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विस, सो दैट इज हिज फाइनल प्रोडक्ट. तो उसके लिए लगने वाले जो भी गुड्स है, दोज विल बी इंटरमीडिएरीज और इनपुट्स. सो फॉरगेट अबाउट दैट. ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. फर्टिलाइजर परचेज बाय द फार्म सप्लायर. फार्म सप्लायर, फार्म प्रोड्यूसर जो फार्म में अपना कल्टीवेशन कर रहा है, उसके लिए जब वो फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है, वो किस लिए परचेज कर रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग गुड क्रॉप्स और नॉट. एंड देयरफॉर फर्टिलाइजर्स फॉर हिम बिकम्स व्हाट? इंटरमीडिएरी एंड नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. अ हेयर कट. मैं जाके हेयर कट करवा के आ गया. इन दैट केस तेरे को तो जरूरत है. इन दैट केस द हेयर कट
fees that you are paying is the final product or not? सर ऐसे कैसे? वो हेयर कट में जो हेयर आएंगे दैट कैन बी सोल्ड बाय दैट हेयर सलून और नॉट? यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. तुम्हारे लिए वो इंटरमीडिएरी है क्या? तुमने अगर हेयर कट नहीं भी करवाया तो भी तुम साधु साधु संत के जैसे दिखोगे, बट दिखोगे तो इंसान ही ना, राइट? Chevrolet windows purchased by the General Motors, again it is input or the intermediary. Correct answer is haircut. Haircut is a service. Haircut is a service availed by the individual, and therefore is included as a final goods. Transfer payments are excluded when calculating GDP because they only reflect inflation. गलत आंसर हो गया यहीं पे. क्यों? ट्रांसफर पेमेंट्स और इन्फ्लेशन का कोई संबंध नहीं है. Excluded when calculating GDP because they do not reflect the current production. ये हो सकता है क्योंकि आपने प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट ट्रांसफर पेमेंट्स किए हैं क्या? नहीं. दोज आर कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स, अगर आपको याद होगा तो. इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग जीडीपी बिकॉज दे आर अ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. आंसर इज रॉन्ग. क्यों? ट्रांसफर पेमेंट्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द जीडीपी. ट्रांसफर पेमेंट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी. तो ये इंक्लूडेड होने की वजह से ये आंसर तो यहीं पे गलत हो गए, और यहां रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन की वजह से ये आंसर गलत हो गया. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी. दोस्तों मैं आपके सामने क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप सोचो समझो. ट्रांसफर पेमेंट, अब मैंने सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैंने करना क्या है. तो इस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट. जो गलत है उसको उड़ाओ, जो बचेगा अपने आप करेक्ट हो जाएगा, राइट? तो उड़ाने के लिए इंक्लूडेड वाले पहले क्यों उड़ा दिया? क्योंकि जीडीपी में हम लोग ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते. ट्रांसफर पेमेंट्स कब आते हैं? जब हम लोग पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने गए थे, अगर आपको याद होगा, तब ट्रांसफर पेमेंट्स आई थी. इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड इज द ट्रांसफर पेमेंट और नॉट? दैट इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज व्हाट? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनएनपी में कहीं पे भी ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, और अगर एनएनपी में नहीं आया तो जीएनपी में नहीं आएगा, जीएनपी में नहीं आया तो जीडीपी में नहीं आएगा. मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम. सो राइट डाउन, ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड while calculating the personal income and not the national income. Transfer payments are included while calculating the personal incomes and not the national incomes. And therefore excluded from GDP. Right? Next, value added refers to any increase in the GDP that has been adjusted for adverse environmental effects, the excess of gross investments over net investment, the difference between the value of firm's output and the value of inputs. जो मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले रखा था ना, मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले रखा था. ए ने बी को सप्लाई किया, बी ने सी को सप्लाई किया. ए ने बी को सप्लाई किया 1 लाख में, बी ने सी को सप्लाई किया एडिंग 40,000, सी ने सप्लाई किया एडिंग 20,000. तो यहां आप क्या कंसिडर कर रहे थे? हर बंदा कितना ऐड कर रहा है. ओनली दैट मच वाज इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडिशन और नॉट? The difference between the value of firm's output and the value of inputs it has purchased from others is what you call as the value added. Value addition includes the processing of the current product or adding in the form of profits.
दोस्तों, आई होप दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेंट वेल फॉर एवरीवन and you have been attending it, so you have been hearing and listening and understanding what I am talking about. Correct? अब यहां पे मैं इसको करता हूं खत्म. अब मैं आ रहा हूं अगले वाले पार्ट पे, दैट इज चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता हूं अभी. इसी तरह से जैसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 डिस्कस किया हमने, उसी तरह से हम लोग चैप्टर 7 भी डिस्कस करने वाले हैं. This method of discussion I hope is going good for everyone. ऑनलाइन जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन को एंजॉय कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दैट. अभी ग्रुप पे शेयर नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इन पीपीटीज को मैं स्लाइड सॉर्टर्स में चेंज करके आई विल बी प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये पीडीएफ्स आपके सामने आ जाएंगे, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे. डोंट यू पीपल वरी ऑन दैट. सिर्फ वो आज रात तक जुड़ेंगे. हाल फिलहाल के लिए आपके पास ये पीडीएफ्स नहीं है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, बस उनका मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल चाहिए. आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, उस समय का सिर्फ सदुपयोग करना है और आप उसी सदुपयोग के लिए यहां पे बैठे हो. आई होप दैट. वेल, आ जाता हूं मैं चैप्टर नंबर 7, पब्लिक फाइनेंस. क्या था पब्लिक फाइनेंस में? पब्लिक फाइनेंस में थी 3 इंपॉर्टेंट चीजें. कौन सी? नंबर 1 दैट इज गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस, नंबर 2 गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, नंबर 3 गवर्नमेंट की रेवेन्यूज. राइट? इन्हीं को हम लोग करते हैं डिस्कस फ्रॉम द एमसीक्यूज. ओके. Which of the following is an example of an automatic stabilizer in the budget? Example of an automatic stabilizer in a budget. That is discretionary spending, progressive taxation, infrastructure investment or unemployment benefits. Automatic stabilizer क्यों दिया जाएगा भाई आपको? So that you this will be considered as an infrastructure investment. क्यों? Because it is going to give you the returns at a later point in time or not. Progressive taxation कैसे हो सकता है भाई? In any circumstance this is not a progressive taxation. क्यों? क्योंकि आप ये as a policy लेके आ रहे हो for the expenditure. Progressive taxation is for the revenue. Right? डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब होता है कि आपने अलोकेशन कर दिया, बट आउट ऑफ दैट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन विल बी स्पेंडिंग दैट. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ऊपर किया हुआ खर्च, स्टेबलाइजर क्यों लगाओगे आप मल्टीपल जगहों पे? व्हाई विल यू पुट दैट? दैट विल बी बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉट. जैसे आज की तारीख में अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लें, ईवीज आर इंक्रीजिंग एंड व्हेन देयर आर राइजिंग ईवीज, इन दैट केस गवर्नमेंट विल बी नीडिंग इन द करंट सिनेरियो द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट? ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवीज. इंफ्रास्ट्रक्चर इन व्हाट सेंस? बैटरी रिचार्जिंग. दैट इज द प्राइमरी थिंग और नॉट? So for that purpose, if the government is incurring the expenditure, that is nothing but a kind of investment expenditure or not. So the more appropriate or correct answer in this case is C, infrastructure investment. Write down. The stabilizers will be put to support a particular industry's infrastructure. Accordingly, it's an investment. D गलत आंसर है. C is the correct answer. Next, assume you built a new house, bought a used car, and bought some government bonds. Which of the following is true? New house, used car, and some government bonds.
consumption and government purchases went up since you bought a used car and government bonds. Consumption and investment went up since you bought a used car and government bonds. Investment and government bonds, government purchases went up since you built a new house and bought government bonds. Investment went up since you built a new house. What is the situation? आपने एक नया घर बनाया, आपने एक नई गाड़ी पुरानी गाड़ी खरीदी और आपने कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे. Now when it comes to the new house, this is investment. When you bought a used car, this is consumption. And when you bought the government bond, this is public debt or not? Right? So more appropriate, consumption and government purchases. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि परचेज गवर्नमेंट द्वारा नहीं की गई है, परचेसेस बाय इंडिविजुअल. सो ए इज रॉन्ग आंसर. अब अगर ए गलत आंसर है तो सी भी गलत आंसर हो गया. क्यों? गवर्नमेंट परचेसेस दिया हुआ है दोनों में. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हाउस इज एन इन्वेस्टमेंट, कार इज अ कंजम्पशन. हाउस इज एन investment, car is a consumption. Therefore B also is wrong. So more appropriate in this question will be what? Investment. अच्छा, ऑप्शन बी में अगर दिया होता इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन तो ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट आंसर होता. ऑप्शन बी अगर दिया होता इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन तो ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट आंसर होता. राइट डाउन. इन्वेस्टमेंट as the long-term capital goods, long-term consumption goods are created. Long-term consumption goods are created. Next, which of the following represents the total amount of money the government owes to the external creditors and domestic lenders? Total amount of money that the government owes to the external creditors and domestic lenders. National debt, budget surplus, fiscal deficit or revenue deficit. This is called as national debt. क्यों? National debt include external debt as well as internal debt. इंटरनेशनल क्रेडिटर से जो लिया वो एक्सटर्नल डेट और डोमेस्टिक लेंडर से जो पैसा लिया वो इंटरनल डेट. राइट डाउन. नेशनल डेट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स, नेशनल डेट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स द एक्सटर्नल डेट एज वेल एज इंटरनल डेट्स. I'll put up the logic. Let me go a bit faster. Let me go a bit faster at this particular moment. National debt includes external debt as well as internal debt. दोस्तों आपको एग्जाम में 2 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हमारे यहां पे लगभग 1 घंटा 18 मिनट निकल चुके हैं और हम लोग सिर्फ 33rd क्वेश्चन पे हैं. राइट? तो हमें भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू फिनिश 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स. ऑफ कोर्स डिस्कशंस के साथ अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लेने चाहिए ना हमने 2 घंटे में. राइट? नेक्स्ट वन. Which of the following is an example of an automatic stabilizer? We have already talked about it. Let's leave it aside. Which of the following is the most accurate definition of supply side policies? Supply side and demand side policies. अगर आपको याद होगा, गवर्नमेंट जब खर्चा करेगी तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो क्या होगा? पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा. पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी. राइट? सो दोज विल बी कंसिडर्ड एज डिमांड साइड पॉलिसीज. या फिर गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस घटाए तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी. डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो डिमांड साइड इनकम बढ़ेगी या नहीं? जो हमने अगर जो हमारे फेस टू फेस के बच्चे हैं हमने डिस्कस किया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल का मतलब क्या होता है? जब आपने डिमांड क्रिएट की मार्केट में, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, उससे इन्फ्लेशन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. उस तरह की पॉलिसीज डिमांड पुल या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब भी आएगी तो दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज द डिमांड साइड पॉलिसीज. पर आपने प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया,
आपने सब्सिडीज दी, आपने पीएलआई, पब्लिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लेके आ गए, दैट विल बी कॉल्ड एज द सप्लाई साइड पॉलिसी. Policies that aim to increase the supply of goods and services in an economy, policies that oppose Keynesian demand management policies, policies that increase the production in an economy, and policies that aim to increase the productive capacity of an economy. Policies that is increasing production or production capacity. गवर्नमेंट को सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट को किस चीज में इंटरेस्ट है? प्रोडक्टिव कैपेसिटीज बढ़ाने में. सो राइट डाउन, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटीज. बेटा जी, तनिष जी, आप यहीं पे गलत हो रहे हो, बार बार आप झटके से आंसर दे रहे हो. आपको क्या करना है? आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, समझने हैं और उसके बाद आंसर देने हैं. राइट डाउन, द पॉलिसीज दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटीज will result into higher productivity for the business, higher production for the business, which will in effect increase the supply in the economy. Increase the supply in an economy and therefore it will be a supply side policy. Therefore it will be a supply side policy. Example, production linked incentive. Example, production linked incentive. Let me come to the next one. Which of the following statements does not apply to supply side policies? Does not apply to. इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए. सप्लाई साइड मतलब या तो वो डिमांड साइड को पुश करेगा या फिर सप्लाई को कोई बूस्ट नहीं करेगा. They seek to improve the institutional framework of the economy to improve its productive capacity. Of course, सप्लाई साइड में हम लोग को प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है या नहीं, पर हमको क्या पूछा गया? जो नहीं करता है. ये तो करेगा, मतलब एक रॉन्ग आंसर हो गया. They aim to improve the efficiency of the factors of production to increase potential growth. वापस यहां पे increasing potential growth की बात चल रही है, मतलब ये भी काम करेगा. हमको कौन सा चाहिए? जो काम नहीं करेगा. To shift, they shift the long run aggregate supply curve to the right. जब आपका aggregate supply curve grow होगा तो it will increase. They can result into the demand pull inflation. Demand pull या cost push किसकी वजह से होगा? डिमांड साइड पॉलिसीज की वजह से, सप्लाई साइड पॉलिसीज की वजह से नहीं. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी. राइट डाउन, only the demand side policies, only the demand side policies can result into the demand pull inflation. Demand pull inflation. Next one. Which of the following is not considered an advantage of the supply side policies? Advantage of supply side policy. Not considered. Not advantage is the question. किसकी वजह से आपके सप्लाई साइड पॉलिसी में फायदा नहीं होगा? Makes factor markets work more efficiently. Of course, ये तो होने ही वाला है. अगर आपके सप्लाई साइड पॉलिसीज आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो या नहीं आप? तो अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो ये आपका एडवांटेज बना. आपको क्या ढूंढना है? नॉट एडवांटेज. मतलब ए रॉन्ग आंसर हो गया. इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन. ऑफ कोर्स, क्योंकि सप्लाई बढ़ा रहे हो ना आप. सप्लाई बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? आपका प्राइस लेवल्स कंट्रोल में आना चालू हो जाएगा या नहीं? सप्लाई इंक्रीजिंग, डिमांड रिमेनिंग द सेम, प्राइसेस विल कम डाउन. So as a result, this will also be an advantage. मतलब हमारे लिए रॉन्ग आंसर हो गया. Are you able to understand this? जो एडवांटेज है वो हमारे लिए क्या है? गलत आंसर है इस क्वेश्चन में.
कैन हेल्प अवॉइड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या? स्टेबल प्राइसेस नहीं, इससे या तो प्राइसेस नीचे जाएगी या तो प्राइसेस बैलेंस में मैनेज होगी, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम मैच होता रहेगा। सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। टैक्स कट्स टू इंप्रूव इंसेंटिव्स कैन बी कॉस्टली फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स कट्स और सप्लाई साइड पॉलिसीज का कोई संबंध है? टैक्स कट्स is a demand side policy and not a supply side policy. So the correct answer becomes what? That is D. The government will reduce the taxes. The government will reduce the taxes under the demand side policies and not the supply side policies. Under the demand side policies and not the supply side policies. Next one, the Cambridge approach to, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया आपका मॉनिटरी मार्केट से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर चैप्टर नंबर 8, कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थियरी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, sorry, demand for money and supply for money. Chapter 8 unit 1 was demand for money, chapter 8 unit 2 was supply for money. मनी सप्लाई और मनी डिमांड याद है क्या आपको? मनी डिमांड में आपने डिस्कस किया था क्वांटिटी थियरी, कैम्ब्रिज की थियरी थी, फ्रेडबिन की थियरी थी, केनीजियन थियरी वाज देयर, टोब्लिन एंड एक और बंदा था हेक्सर एंड टोब्लिन, इनकी भी थियरीज थी। ये सारी थियरीज किस बेसिस पे थी? डिमांड की थियरी। और कैम्ब्रिज थियरी में बेसिकली कैश बैलेंस हम लोग कितना मेंटेन करते हैं उस पे थी। सो द करेक्ट आंसर इज कैश बैलेंस अप्रोच, राइट? The theory as laid down for demand for money. Just write down the logic for that. The theory as laid down for demand for money. Chapter 8 से related है, यहां पे क्वेश्चन आ गया, मिक्स हो गया थोड़ा सा। Next one. The government makes the provision of which goods those cannot be provided through the market. मार्केट और गवर्नमेंट ये दो चीजें हैं। मार्केट कौन से गुड्स देगा? प्राइवेट गुड्स। गवर्नमेंट कौन से गुड्स देगी? पब्लिक गुड्स। प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स, पब्लिक एंड मेरिट गुड्स, पब्लिक एंड नेसेसरी गुड्स, गिफन एंड मेरिट गुड्स। अच्छा, गिफन गुड्स तो यहां पे उड़ गए, ये आपके एक्सेप्शंस वाला बात है अगर आपको याद होगा। इंफीरियर गुड्स, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू सप्लाई विद इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, सो डी इज ऑल एलिमिनेटेड। पब्लिक एंड नेसेसरी गुड्स, अब नेसेसरी गुड्स ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, मतलब ये जबरदस्ती में घुसेड़ा हुआ ऑप्शन है या नहीं। सो ऑप्शन सी बिकम्स रॉन्ग। गवर्नमेंट नेवर प्रोवाइड the private goods, therefore A is also wrong. So more appropriate or correct answer is what? Public and merit goods. There is a difference between public and merit goods. Public goods कौन से? जो हो सकते हैं merit goods ना भी हो, but merit goods are always, sorry, merit goods हो सकते हैं, public goods ना हो, private goods भी हो सकते हैं, but public goods will always be the merit goods. Therefore the correct answer is B. As the supply for public goods, will be limited by the private sector, therefore necessities and merit goods, there is a difference between the two. नेसेसिटीज जो होती हैं ये पब्लिक गुड्स का ही पार्ट है, जैसे सीवेज सिस्टम। इन अ सिटी यू नीड अ गुड सीवेज सिस्टम, नाउ दैट इज अ नेसेसिटी, बट इट्स अ पब्लिक गुड और नॉट। दैट्स व्हाई पब्लिक गुड्स इंक्लूड द नेसेसिटी, बट पब्लिक गुड्स मे नॉट इंक्लूड ऑल द मेरिट गुड्स, राइट? देयरफॉर मोर अप्रोप्रिएट आंसर विल बिकम व्हाट? पब्लिक एंड मेरिट गुड्स। जी, क्या लिखा आपने? will not be supplied by the private sector and therefore such public goods are supplied by government. Next, which of the following parameter consists of interest, dividend fees and other receipts for services of the government? For services of the government, non-tax expense, tax expenses, non-tax revenue or tax revenue. Interest, dividend,
fees, other receipts. These are what? Non-tax revenues of the government or not? Right or not? Write down. These are earned by the government. These are earned by the government against the investments or the services provided, therefore are called as non-tax revenue. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ झूठ? इनमें से झूठा स्टेटमेंट कौन सा? द वेरी लॉन्ग रन फोकसेस ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी. इन द वेरी लॉन्ग रन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अज्यूम टू बी गिवन. इन द वेरी शॉर्ट रन shifts in aggregate demand determine how much output is produced. Fluctuations in the rate of inflation and unemployment are important in the long run issues. एक्चुअली देखा जाए तो ये माइक्रो का पार्ट है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन ऑफ द बिजनेस एंड द लॉन्ग रन ऑफ द बिजनेस. अगर आपने चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन साइकिल्स देखा होगा तो प्रोडक्शन साइकिल का एक पार्ट शॉर्ट रन प्रोडक्शन साइकिल, लॉन्ग रन प्रोडक्शन साइकिल. लॉन्ग रन प्रोडक्शन साइकिल में यू इग्नोर द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यू फोकस ओनली ऑन द कॉस्ट्स इन द लॉन्ग रन. सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज false? Fluctuations in the rates and of inflation and unemployment are important long run issues. No. क्यों? In the long run inflation is bound to happen. In the long run unemployment is bound to be controlled. Write down. In the long run production cycle, माइक्रो का हिस्सा है, अब आ गया है तो फिर गेहूं में धान पीस डालते हैं. In the long run the inflation is bound to be there, and also the unemployment is one of the important factor, right? वो शायद इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट दिख गया ऑप्शंस में तो इसलिए पिक कर लिया गया वो क्वेश्चन, right? Gross investment refers to private investment plus public investment, net investment plus replacement investment, net investment after it has been inflated for changes in the price level, net investment plus net exports. Gross investment public debt से related है, public investment से related है, that is your net investment plus replacement investment. क्यों? गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है. गवर्नमेंट नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? पैसा कुछ जगहों से निकाला और कुछ जगहों पे लगाया, दैट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट. एंड प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सी? जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करके आपने नया पैसा वहीं के वहीं लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. राइट डाउन. Total amount divested and the fresh investments newly made. Total amount divested and the fresh investment newly made, comma, the difference between the two is the net investment and the existing investments replaced by the existing divestments. The existing divestments
आर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 25% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, मान लो। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में से स्टील गवर्नमेंट ने अपना 25% स्टेक निकाला और उतना ही पैसा एलआईसी ने लगा डाला ना। एलआईसी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ है नहीं। गवर्नमेंट ने अपने 25% निकाले, पर वो पैसा किसने लगा दिया? एलआईसी ने। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट तो वहीं के वहीं रहा है नहीं। दैट्स व्हाई इट विल बी बिकमिंग रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, राइट? नेक्स्ट, the amount of after tax income received by the households is measured by, in fact chapter 7 का पार्ट है ये, सॉरी chapter 6 का पार्ट है। amount after tax income received by the household is nothing but disposable income, is the disposable income. Just write down personal income minus personal income tax, personal income minus personal income tax is the disposable income for the households. Is the disposable income for the households. Next, which of the following represents the total amount of money the government owes to the external creditors and domestic lenders? Of course, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। नेशनल डेट इज द आंसर फॉर दैट। Next question, what is the primary goal of counter cyclical fiscal policy in budgeting? काउंटर साइक्लिकल मतलब क्या? जो साइकिल अप ट्रेंड में है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, डाउन ट्रेंड में है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, दैट इज व्हाट यू कॉल एज काउंटर साइक्लिकल। मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन और नन ऑफ दीज। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन में गवर्नमेंट डिफ्लेशन से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। सो करेक्ट आंसर इज स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। द फिस्कल पॉलिसी इज फ्रेम्ड, द फिस्कल पॉलिसी इज फ्रेम्ड टू क्रिएट macroeconomic stability, to create the macroeconomic stability in the macroeconomic stability in the prices and unemployment. Next one, deficient demand leads to inflationary gap, deflationary gap, both A and B, none of these. एक बात हमेशा याद रखना, या तो एक सिचुएशन की वजह से इंफ्लेशन क्रिएट होगा या तो डिफ्लेशन क्रिएट होगा, दोनों एक साथ क्रिएट नहीं हो सकते। देयरफॉर सी तो हो गया गलत, राइट? अब आपकी डिमांड कम हो रही है, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, क्या होगा? प्राइसेस नीचे आना चालू हो जाएंगे। प्राइसेस नीचे होंगे तो जो प्रोड्यूसर है उसका इनकम लेवल कम होगा, उसका अगर इनकम लेवल कम होगा तो वो फैक्टर्स को जो पैसा दे रहा है वो कम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट विल क्रिएट व्हाट? डिफ्लेशनरी गैप। राइट डाउन, द रिडक्शन इन डिमांड लीड्स टू द रिडक्शन इन ओवरऑल इनकम लेवल्स, leads to reduction in overall income levels, which can create the deflationary gap, which can create the deflationary gap. Is one right? Next one, which of the following are capital receipts of the government? Capital receipts, गवर्नमेंट के दो टाइप के रिसीट्स होते हैं, करंट रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स या तो डाइवेस्ट करके आते हैं या तो लोन्स के तौर पे आते हैं। रिकवरी ऑफ लोन्स, डाइवेस्टमेंट, बोरोइंग, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा? रिकवरी ऑफ लोन्स, डाइवेस्टमेंट, बोरोइंग या ऑल ऑफ द अबव?
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्यों? क्योंकि जब जब गवर्नमेंट को पैसा आएगा, एक तो लोन दे के रखा था, वो पैसा वापस आ रहा है, ये वापस देने वाले हैं क्या? नहीं, मतलब ये वन टाइम हुआ, सो दैट बिकम्स अ कैपिटल रिसीट. नंबर 2, डिसइन्वेस्टमेंट. आपकी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से आपने शेयर्स बेच दिए, तो आपको जो पैसा मिला वन टाइम मिला, सो इट बिकम्स कैपिटल रिसीट. तीसरा, आपने पैसा बोरो किया. नाउ दिस यू विल बी रीपेइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और नॉट. You don't borrow every day as such for the same purpose. That's why the correct answer is all of the above. As all of the above include one-time receipts, as all of the above include one-time receipts, therefore categorized as capital receipts. Next line, whereas current receipts include tax revenue or the non-tax revenue, or the non-tax revenue in the form of interest, dividend, etc. Non-tax revenue in the form of interest, dividend, etc. Next one. Which of the following is or are the components of fiscal deficit? Budgetary deficit, market borrowings, expenditure made from Pradhan Mantri Rahat Kosh. Only one, only two, only three, or 1, 2, 3. अब यहां पे एक सिंपल सा बात बताऊं, बजेटरी डेफिसिट और मार्केट बोरोइंग ये आपके फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा है. अगर ऐसा है तो ओनली वन, ओनली टू ये इंडिविजुअली करेक्ट आंसर हो सकता है क्या? नहीं. मतलब ऑटोमेटिकली 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो गया है. नहीं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. क्यों? आपको पता चल गया कि बजेटरी डेफिसिट ये आपके फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा है. मार्केट बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट होगा तो आपको मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ेगा, सो दैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फिस्कल डेफिसिट. एंड दैट्स वाई अगर 1 and 2 है तो 3 को ऑटोमेटिकली होना पड़ेगा. आपको समझे या नहीं समझे? 3 क्या है, 3 का इंपैक्ट क्या है फिस्कल डेफिसिट का, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑल 1, 2 and 3. राइट? फिस्कल डेफिसिट is based on the expenditure minus revenue. Fiscal deficit is based on expenditure minus revenue, and therefore all will be included in the fiscal deficit. Just going to discuss 2 more questions today. And rest of the questions we'll be doing after the rest of 10 days, 9 days in fact, that is on 28th of August. 28th of August को मेरा सेशन कंटिन्यू रहेगा from 4:30 onwards till the point I finish all the MCQs that I'll bring on that day related to chapter number 7 के बचे हुए 10 क्वेश्चन, chapter number 8, chapter number 9, chapter number 10. मतलब लगभग 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने हमको on 28th of August. Which of the following is the key operational target in a budget? Operational target मतलब गवर्नमेंट किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करती है? That is fiscal deficit or revenue deficit or the general government debt or the central government debt. गवर्नमेंट का पूरा फोकस होता है सिर्फ एक चीज पे, वो है फिस्कल डेफिसिट को कम रखना. The government will always try to reduce its fiscal deficit. Key operational target in a budget पूछा है बेटा, बजट. अगर पब्लिक डेट मैनेजमेंट पूछा होता तो C would have been the correct answer. ठीक है? Last one, budget of government generally impacts everyone including me.
the resource allocation in the economy, redistribution of income and enhanced equity, stability in the economy by measures of control price fluctuations, all of the above. So correct answer is all of the above. Because the budget reduces the gap of inequality. Budget reduces the gap of inequality and also tries to bring the stability in the economy. The stability in the economy. So with this, I am closing down the session for today. I hope you people whomsoever has attended have enjoyed this particular session. वापस से मिलेंगे हम लोग 28 अगस्त को फॉर द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट. और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिए मेरे प्रैक्टिस विद एम्प्टी सेशंस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स वो रिज्यूम होने वाले हैं कल से, जिसमें इनिशियली कंपनी अकाउंट चल रहा है और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग पार्टनरशिप पे. अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.